Dear students, let us do question number 2. In question number 2, see the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. Means triangular walls are given to us. In the figure you can see the triangular walls. These are used for advertisements. Their sides are given to us, 3 sides. The advertisement yields an earning of 5,000 per meter square per year. एक साल में जो एक वॉल से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, अर्निंग होती है, वो कितनी है? ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर. सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 है. तो वॉल का तो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर नहीं होता, वो तो ज़्यादा होता है. वो हम फाइंड आउट करेंगे. पूरा एरिया कितना है वॉल का. अ कंपनी हायर्ड 1 वॉल फॉर 3 months. एक कंपनी ने 3 months के लिए ये वॉल ली है. हाउ मच रेंट डिड इट पे. तो कितना पे करेगी वो कंपनी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फिगर. दिस इज अ फ्लाईओवर and these are the side walls. Triangular sides are there. The 3 sides of the wall are given to us, 122 meter, 120 meter and 22 meter. For 1 meter square, for 1 meter, एक छोटे से टुकड़े के लिए they are charging 5,000 rupees per year. तो पूरी वॉल का कितना पे करना पड़ेगा पूरे साल का, या फिर उन्होंने पूछा है फॉर 3 months हाउ मच वी हैव टू पे. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द वॉल, बिकॉज फॉर 1 meter square द कॉस्ट इज 5,000. फॉर द कंप्लीट एरिया लेट अस फाइंड आउट. सो बिकॉज 3 sides आर गिवन टू अस, वी आर गोइंग टू यूज Heron's formula. We can use in this half base into height also, but it is not sure that it is a right triangle or not. In the figure it seems to be right, but still. So let us start with semi-perimeter because that is required for the formula. So semi-perimeter is A plus B plus C divided by 2. So what is A? From the figure you can see A is 122 meter, B is 120 meter, C is 22. So let us put the values. 122 plus B 120 plus C 22 divided by 2. By solving it, dear students, you will get semi-perimeter is equal to 132 meter. Perimeter is always a single unit. Do not put the square. Now let us find out the complete area of the wall, either of this wall or of this wall. So let us write the formula. Square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. So let us put the values. What is S? 132 meter. 132 into 132 minus 122 into 132 minus 120 into 132 minus 22. So 132 into 10 into 12 into 110. So dear students, if you are not able to split this orally, you can do the prime factorization of the given number. 132, we can do the prime factorization in the rough part. 132, we'll get the prime factors of 132 as 2 into 2 into 3 into 11. So let us put the prime factors over here. Then multiplied by 10 as it is. Then 12. 2 2s are 4, 3s are 12. Again I have prime factorized it. Then 110 can be written as 11 into 10. Now to solve the square root, you know we have to make the pairs. So let us make the pairs. एक पेयर 2 का यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से. 1 3 is here, 1 3 is here. So we have a pair of 3 also. We have a pair of 10 also. And we have a pair of 11 also. So by multiplying we will get the area of the wall, 1320 meter square. So now this is the complete area of this wall, but we have to find out the rent to be paid for 3 months. So what is the procedure? Let us see. Now earning from
Ad means advertisement in 1 year. For complete 1 year, for only 1 meter square, we have to pay 5,000. 1 year means 12 months. 1 year means 12 months. 12 months rent is 5,000. So we will calculate from 12, we'll get the rent for 1 month. जब बड़े से छोटे पर जाएंगे बेटा, 12 मंथ से 1 मंथ पे जाना है, ज़्यादा मंथ से छोटे पर, तो वी विल डिवाइड. किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा करना हो तो डिवाइड किया जाता है. तो 5,000 डिवाइडेड बाय 12. सो नाउ फ्रॉम 1 मंथ वी हैव टू कैलकुलेट द रेंट फॉर 3 मंथ्स. सो नाउ 1 से हम बड़े पर जा रहे हैं, तो अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. जब 12 से 1 मीन स्मॉलर पर गए तो डिवाइड, अब स्मॉलर नंबर से ग्रेटर पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई. सो बाय कैलकुलेटिंग दिस, अर्निंग फ्रॉम द एड इन 3 मंथ्स शुड बी 1,250 पर मीटर स्क्वायर. नाउ रेंट टू पे फॉर 1 meter square is 1,250, but the complete area of the wall is 1,320 meter square. So this is only for 1 meter square. तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा, अगेन फ्रॉम स्मॉलर टू वी आर मूविंग टू ग्रेटर, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. सो बाय मल्टीप्लाइंग विल सी दैट द रेंट टू बी पेड बाय द कंपनी फॉर 3 months is 16,50,000 rupees. So in this way you can see how much benefit the government takes from these walls, from these advertisements. So dear students, I hope the question is clear to you. So do it in your notebook and try the remaining questions yourself. All are almost similar to each other.